Hey everyone, it's me देविका। वीडियो के थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे what I'm going to draw today. Yeah, it's Mr.beast logo. Recently Mr.beast and Mark Rober मिलके एक collaboration किया था where they said they're going to remove 30 million pound trash from ocean exchange of $30 million in the end of the year 2021. And they did it. Can you imagine 30 million pound trash? It's a lot. But they did it as they said in 1st January 2022, and for that the beaches and the sea will going to be more cleaned. But this would not have been possible by themselves if other YouTuber creators were not involved in it. बहुत सारे यूट्यूबर ने फंड रेजर के लिए साइन अप किया था एंड बाकी यूट्यूबर ने मिस्टर बीस्ट एंड मार्क रॉबर का ये न्यूज़ यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया पे स्प्रेड करके हेल्प किया था. I mean literally it's a lot because Mr. Beast and Mark Rober का ये #Team Seas का ये प्रोजेक्ट करने के लिए ऑलमोस्ट पूरा YouTube एक यूनिटी पे आया था. पर इन द एंड लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट फेल होने वाला है क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए teamseas.org साइट पे 30 मिलियन डोनेशन कलेक्ट कर रहे थे. बट इतनी सारी हेल्प के बावजूद भी 30 दिसंबर तक टीम सीज ने सिर्फ 26 मिलियन ही कलेक्ट कर पाए थे एंड इसके लिए प्रोजेक्ट का डेट भी एक दिन एक्सटेंड करा गया था. बट व्हेन एवरीवन थॉट इट्स गोइंग टू बी फेल, दैट मोमेंट अ पर्सन नेम ऑगस्टिन रसेल डोनेट $4 million बिफोर द एंडिंग ऑफ 2021 एंड इन दिस वे दे अचीव देयर गोल ऑफ collecting $30 million donation. Wow, the journey of #TeamSeas was the best. And वीडियो के एंड में मैं बोलना चाहूँगी we support Mr. Beast and Mark Rober and love their work and we need more projects like that. And also want to say we also want to donate in their next project from India. Thank you for watching my video. You can support me by clicking the subscribe button and hit the bell icon and don't forget to hit the like button too.